I will just quickly go through all the formulas, just as a quick reminder, Yes, sir. including orbital magnetic moment and all that, and units. And then we will do numerical practice today because वो नहीं हमने करी, हमने topic आज काफ़ी इकट्ठे कर हाँ लिए. जी। ठीक है, so we will start with. तुम्हारे बाल सही हैं यार, मेरे जैसे ही हैं ऑलमोस्ट, थोड़े ज़्यादा फ्लफी हैं नहीं? यस सर, ओके, थोड़े बढ़ बढ़िया. गए हैं अभी। हाँ नहीं, मेरे कट गए हैं. आई हैव गॉट देम ट्रिम्ड. मेरे ओ- स्पीड है बड़ी, बहुत जल्दी जल्दी आ जाते हैं मेरे ओके सर। नेल्स और बाल दोनों मेरे बड़े तेज उगते हैं. अच्छा। Okay, so I'll just quickly write all the formulas we're going to use today. Theoretically, we have dealt with them. So हम्म। torque is mb sine theta. Okay, and यस सर। potential energy is minus mb cos of theta 1 minus cos of theta 2. Sorry, change the final minus initial. Okay, otherwise torque is a vector product of this, and u is minus m dot v vectorially. So this हम्म। is magnitude, and then we also work done gets stored in the form of potential energy given by this. Okay. Second, special cases I will not discuss. In हम्म। each one of them, maximum torque, maximum there's that, right? यस सर। Perpendicular 180, unstable equilibrium, stable equilibrium. That is more theoretical. The magnetic. Okay, so this is your dipole. Okay, which is what we are studying today. The second thing we are studying today is the topic of magnetic moment. Okay, ओके। so magnetic moment and of a current loop. हम्म। Okay, so that was NIA, right? यस If सर। it has n turns, and then we to use this magnetic moment in a something like this, and we had area pi a square and all. So this is the area. And then if you have to find the orbital magnetic moment in terms of, it was EVR by 2 is equal to EM, sorry, E by 2M. सर आपकी आवाज काफी खराब आ रही है। Take second. Is it better now? Just wait. सर आपका शायद लैपटॉप माइक शुरू हो गया। Acha. Okay, wait. Has been changed to. How is it now? Okay, yes, हाँ you're अब right. ठीक है। I think it's better now, right? अब Okay, तो बहुत got it. अच्छा। वो actually वो. Okay. So E by 2M हम्म। and multiply by the angular momentum is equal to N into EHY. Please be very careful that you don't just end studying this topic at this point. Most of the students end up at this point, they don't go to the electron. So यस सर। mu orbital magnetic moment, which is EVR, हम्म। okay, divided by 2 is equal to, and this is your angular momentum, and this is your Planck's constant. This is your principal quantum number. Okay, so just be very careful that this is studied. And then यस सर। last thing we studied was the Bohr magnetron definition. जब n is equal to 1 डाल देते हैं फॉर्मूले के अंदर, so you हाँ। get a Bohr magnetron, right? We studied the value as 9.27 into 10 raised to power minus 24 am square to be mu b, हम्म। right? So this was the orbital magnetic moment we got when we substituted the value here. ये जो E h4 pi me और n is equal to 1 डाला था हमने, so the orbital magnetic moment calculate होके ये आया था इलेक्ट्रॉन का in the orbit number 1. यस सर। तो ये हमने बोला था इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं, just write it like this. So today all the numericals are going to be based on dipole, ओके। torque on a dipole, and the energy stored inside the dipole, magnetic moment, and orbital magnetic moment. So this is your magnetic moment of a current loop, NIA. Unit wise, if you want to talk about torque, always is in Newton meter. This is no brainer, right? And this यस is सर। m into b, and this is always in joule. Magnetic moment, you can see this is ampere हम्म। meter square,
and the units of orbital magnetic moment, preferably convert everything into Bohr magnetron. Right? So Okay. whatever answer you get, multiply with this and you will get the number of Bohr magnetrons. तो पहले निकाल लो या तो EH by 4 pi ME तो fixed है. So these many magnetrons multiply by N. If you're given a principal quantum number N equal to 2 into this, which is this part is the Bohr magnetron part. So 2 Bohr magnetrons, Yes, sir. etc. etc. So first orbit में 1 magnetron आता है, 1 Bohr magnetron. So we'll do all the numericals. Magnetic moment का जो unit ampere meter square is also written as joule per Tesla. ठीक है. One and the same. So either you write joule per Tesla or you write ampere meter square. These are two equivalent things. Okay. So we can refer to them because we're just beginning to do some numericals. Once we understand it, we will do some unsolved questions from exemplar and all of that, right? Some basic questions quickly we will do and take care of this. What type of question? So for example, you're given a needle, okay? So question number 1, for example, you're given a needle and the magnetic moment of the needle, okay, is given to be 4.8 into 10 raised to power minus 2 joule per Tesla. Okay, so M is given, and it's a magnetic needle, something like a very miniaturized bar magnet, and it is placed at an angle of theta is equal to 30 degree with the direction of the uniform magnetic field. So this is your uniform magnetic field. This is your needle. It is placed at 30 degree with the magnetic field. You have to find the, so B is given to be 3 into 10 raised to power minus 2 Tesla. Calculate the torque. So MB sin theta. Value substitute karo, answer. Yes, sir. Newton meter. Meter. So people write it as joule, please don't. Although this is force into force arm in rotational dynamics. बताया था ना मैंने rotational turning. The turning impact of the capability of the force to turn something is called torque, provided by the force. So torque is provided by the force by applying the force away from the axis of rotation. जैसे मैंने बोला था दरवाजा है, यहाँ पे अगर मैं धक्का मारूंगा तो दरवाजा खुल जाएगा क्योंकि एक्सिस से डिस्टेंस पे है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे धक्का मारूंगा दरवाजा नहीं खुल पाएगा क्योंकि देयर इज नो टॉर्क. वी नीड अ फोर्स आर्म आल्सो. फोर्स को एक बाजू भी चाहिए, आर्म, to be able to produce that turning. So turning can only be produced if there is a distance between the line of action of the force and the axis. So जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही होती है उसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स. और एक्सिस जो होता है जिसके अराउंड वो घूमा वो यहाँ पे, तो इन दोनों का यहाँ से ड्रॉप अप परपेंडिकुलर. दिस इज द डिस्टेंस वी वांट फॉर द टर्निंग इम्पैक्ट. ठीक है. Okay, what else can you get in these? Okay, so question number 2, for example, cakewalk, again a bar. So needle was nothing but a bar magnet, right? Dipole. A needle is a dipole. It has a south and a north pole. Again, you are given a dipole or a magnet, and for example, the magnetic moment is given to be 0.9 joule per Tesla. Okay, and theta is equal to 30 degrees. The torque experienced is given to be some value 0.125 Newton meter, and you are supposed to calculate the magnitude of the magnetic field. So torque is equal to MB sin theta. 0.9 is equal to M. We have to find, अच्छा M दिया हुआ है, torque दिया हुआ है 0.0125, right? So 0.0125 is equal to M into B. Okay, what is the value of B? So we have to find the B. So B मालूम नहीं है, into theta sine of 30 degree 0.0125 is equal to 0.9 multiplied by B into sine 30. B is equal to whatever you get. Second question, for the same situation when the dipole makes 30 degree with B, when the dipole is at an angle of 30 degree with B,
right? Find the potential energy stored in the dipole. U is equal to minus U B cos of 30. Sorry, M. M मालूम है, B निकाल लिया ऊपर से, cos of 30 will give you the potential energy with a negative sign. Yes, sir. Standard question है. बोलेगा, please tell us what orientation of the bar magnet will give a stable equilibrium. Theta is equal to 0 degree because U is equal to minus M B cos of 0 is negative. The most negative you can get is at 1. So this is the most negative. Yes, sir. Okay. So, and that means M is parallel to B. This we have done theoretically. ठीक है. Yeah, question number 3. Again, you have an iron, and Yes, it sir. has NCERT a के questions है. yeah NCERT, CBSE mix जो भी है, mainly NCERT. Okay. Okay, now this you have a iron bar, and the dimensions of the iron bar are given to you. The density of iron is also given to you. Okay, so volume is known. Okay, so iron bar hai, some iron bar is there, so you can find the mass. Mass is equal to volume into density, Volume right? density. तो आयरन का आपको डायमेंशन एक बार दिया हुआ डायमेंशन, और उसके मैग्नेट 5 into 2 centimeter into 2 centimeter. Okay, so this is your volume. 5 2s are 10, 20 centimeter cube, which is 20 into 10 raised to power minus 6 meter cube. Yes, sir. Right now, the magnetic moment of this one atom of the iron is 1.8 into 10 raised to power minus 23 m meter square. थोड़ा अब वो लगा रहा है अवगाद्रो मोल कॉन्सेप्ट कि जी इतने वॉल्यूम के अंदर इतना वॉल्यूम है, और डेंसिटी भी दी हुई है, रो is 7.8 gram per centimeter cube. So you are given in one atom the magnetic moment stored is this much. Every atom has, वही paired और unpaired electron की वजह से, it has a magnetic moment. The atom has a magnetic moment. Correct. Atom of the iron, atomic level पे, right? And you know the dimensions, you know the density, you can find the mass also. Mass is equal to V into rho. So ये ग्राम में आ जाएगा. And atomic mass of the iron is known to you as 56. So 56 grams of iron will have 6.023 into 10 raised to power 23 atoms of iron. 1 gram of iron will have 6.023 into 10 raised to power 23 divided by 56. These are the number of atoms of iron present in 1 gram. But you have these many grams, right? So multiply by 7.8 into 20. ये mass है हमारे पास. Grams. So you will get these many grams of iron. Yes, sir. Atoms, sorry. ग्राम तो निकाल लिए. These many atoms. So ये grams है, but जो अभी हमने calculate करा है, ये atoms है. And one atom has this much magnetic moment. So these many atoms will have into 1.8 into 10 raised to power minus 23 as the total magnetic moment available to you in these many atoms of iron. ठीक है. Unitary method करा, कुछ नहीं करा. Yes, sir. Mass से add number of atoms. From number of atoms, one atom has this much magnetic moment. These many atoms will have how many total magnetic moment? Multiply with the number of magnetic atoms with magnetic moment of a single atom. Any doubts? Please ask. नहीं, ये तो Should be clear, I think. Any? Okay, so you know now what is the total magnetic moment of this iron bar, जिसकी ये टुकड़ा जो दे रखा है. Microscopic level पे you went inside it, you calculated the number of atoms in it. टुकड़े का मास ढूंढ लिया डेंसिटी और वॉल्यूम से, और टोटल मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लिया. सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज, नाउ व्हाट यू डू इज यू say that this magnetic movement, whatever you are getting, now this is kept inside a magnetic field perpendicularly. So this bar is taken, and this bar is then kept perpendicularly inside a uniform magnetic field. Don't go by my distance. The distance is equal, so uniform है. मेरे से सीधी लाइन नहीं बन रही है. Don't worry about it. Diagram. Fair enough. Okay, so theta is 90 actually. So torque is mb sin 90, right?
Yes, sir. Maximum torque will be applied at this stage. Put the Hmm. values of the m which you've calculated above for the total bar. Hmm. m तो निकाल लिया आपने, एक एटम का पता था, नंबर Hmm. ऑफ एटम्स भी पता थे, m निकल गया आयरन बार का, Yes, sir. मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ आयरन बार इज नोन, पुट इट हियर, b दे रखा है आपको, b इज गिवन टू बी वैल्यू ऑफ 15,000 गॉस. Hmm. Okay, convert Gauss into Tesla by multiplying it with 10 raised to power minus 4. 1 Gauss is 10 raised to power minus 4. So multiply this with 10 raised to power minus 4 and get Tesla. Okay. Okay, Gauss. 1 Gauss Hmm. is 10 raised to power 5. This conversion should be memorized. Important. CGS होते हैं. These are CGS units. So you are able to find the torque also. Understood. Okay. I'm going to the next page now. So you're saturated on this page. Ah. Okay. Now let's consider the next question. And this is let's talk about there is some loop which is available to you, any shape. Okay. Hmm. It's a closed loop, it has a current inside it. Okay, so the area of this loop is given to be some 10 into 10 raised to power minus 4 meters square. The current it carries is 15 amperes. Okay, and Okay. the observer sees the current is flowing in this direction, Hmm. clockwise. So I can hold my hand and say, okay, if it is anti-clockwise, the direction will be in my face. So it is clockwise. So therefore the direction is this, right? तो आपको निकालना क्या, m इज इक्वल टू आई इंटू ए, प्रोडक्ट है ये, Okay. वेक्टर प्रोडक्ट हाँ. नहीं, नॉर्मल. मैं Yes, sir. लिख देता हूँ, मैग्नीट्यूड वाला प्रोडक्ट है, मैग्नेटिक मूवमेंट आ गया, आंसर. मल्टीप्लाई द टू, मल्टीप्लाई 15 एम्पियर्स विद दिस, m इज इक्वल टू आई ए रूल होता है, आंसर. Hmm. नॉर्मली तो ए वेक्टर लेते हैं ना, तो ए वेक्टर जो Yes, होता sir. है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप होता है. अगर Hmm. ये एंटी क्लॉकवाइज है तो उस साइड है, पीछे वाली साइड पे m की डायरेक्शन. अगर Yes, पूछते sir. हैं तो बोलो बैक साइड ऑफ द प्लेन अच्छा. इन माई ठीक. डायग्राम. इन्होंने कोई डायग्राम वैग्राम नहीं दिया, तो अपने आप ही डायग्राम बना को कि द बैक साइड इधर, दिस इज द डायरेक्शन, Okay. बिकॉज it is written in the question that it is clockwise. Hmm. Okay. Question number 4. So you're from dipole, you have walked into the magnetic moment of a current carrying loop IA. Number of turns दे दूंगा तो n से मल्टीप्लाई कर देना, NIA कर देना. Hmm. Yes. Any doubts? नहीं, Straight, अभी बिल्कुल तक नहीं. straight forward. Formula Hmm. fitting, mechanical. So now you're given current to be 10 amperes. It's a loop and there are Hmm. n turns. And the radius is equal to 70 centimeter, very huge. The whatever is this loop lies in this plane. Hmm. Okay, it can be any shape. The area is more important, right? The question is, what is the magnitude of m? Nothing. N I A. So n is 10, 10 into pi 0.7 whole square. Meter में convert करना जरूरी है, मीटर में convert. right? And now the Hmm. current is in the direction, it's in xy plane, let's say. अगर नहीं पूछा दिया करंट की डायरेक्शन क्या है, देन या तो इधर होगा, Hmm. if I show the current, अगर करंट में ऐसे मान ले तो नीचे होगा. Either ways the answer is perpendicular to the plane of the coil. अच्छा. Circular है, टेढ़ी मेढ़ी है, we don't know. Can be any Hmm. shape, doesn't matter. मुझे तो एरिया से, रेडियस दिया तो सर्कुलर ही है, ठीक है. प्लेन में है, ऊपर नहीं है, यूं है, जमीन पे लेटी हुई है. Hmm. मैं यहाँ बना देता हूँ इसको, so that it looks in a plane. अब बेटर है. So हाँ. Yes, sir. m is perpendicular in, या तो m इधर होगा या नीचे की तरफ होगा, डिपेंड करंट कहाँ पे है, वो दिया नहीं है इन्होंने. Hmm. Second part, now what you do, you keep this loop in xy plane. ये xy plane है मेरा, because I've treated this as x, this is y, and this is z. So now what I do is this loop is now kept in an and you know it's a loop, it behaves like a bar magnet. South and north आ जाता है इसके अंदर. Hmm. I told you yesterday, if it's a current carrying loop, one side of it becomes south, the other side becomes north. Hmm.
It behaves correct. like a dipole only. Dipole loan. हाँ Remember? हाँ याद है मुझे. ठीक है. All right. Now let's talk about. Okay, so you have kept this in a external magnetic field. So let me introduce a external magnetic field. But the external magnetic field is like this. Okay. It is in x-axis. So B, now second part of the question. Question 4, second part. The B which is provided to you is Bx. And you have kept this loop. Question is, what is the torque which is experienced by this loop? ठीक है? Now if you see, it basically amounts to the fact कि M, you can see the direction of M, right? It is this. So M या तो downward होगा या upward होगा, दोनों केस में it is going to be 90 degree with B. हाँ M या yes तो sir. ऐसे होगा या ऐसे होगा, और B तो ऐसे जा रहा है. correct. या नीचे होगा तो भी 90 है, इधर है तो भी 90 है. हम्म तो आपको निकालना क्या है? यू हैव टू फाइंड द टॉर्क. yes टॉर्क sir. इज M, B and sin theta. So M is known to you, B is known to you, and then sin 90. ठीक है. ठीक है? yes sir. Now what it says is how you should be placing it so that it comes in stable equilibrium. जैसे कि हम बोलते हैं बार मैग्नेट के लिए, एक बार मैग्नेट स्टेबल इक्विलिब्रियम में कब है? जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो नॉर्थ टू साउथ जा रहा है. क्वेश्चन नंबर 3. नाउ द व्हाट शुड बी द पोजीशन ऑफ दिस लूप? करंटली इट इज इन XY प्लेन लाइंग ऑन द ग्राउंड. ये कैसे घूमे कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ जाए? क्योंकि इस समय तो इसके ऊपर खूब टॉर्क लग रहा है. टॉर्क लगता है. और एनर्जी की अगर मैं बात करूं इसकी, यू बी मतलब टॉर्क इज इक्वल, अगर मैं एनर्जी भी देखूं तो -mb cos 90 है एनर्जी. जीरो हो गई. yes sir. 0 जूल. U W, राइट? बट yes sir. नेगेटिव होती है जो सबसे कम होती है स्टेबल इक्विलिब्रियम में. नेगेटिव तो नहीं है ये. नहीं है. या तो +mb होती है टोटल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, या -mb होती है वेरी वेरी स्टेबल इक्विलिब्रियम, या 90 डिग्री पे 0 होती है. correct. तो ये तो क्या बोल रहा है कि इसको कैसे घुमाऊं मैं? इन विच प्लेन विल इट बिकम स्टेबल इक्विलिब्रियम? इट इज लाइक सेइंग दैट दिस इज magnet is currently like this because the this is N and this is south, so the magnetic moment is from south to north. तो M की डायरेक्शन ये है और B ऐसे है. ठीक है? ठीक है. मैं इसको घुमा के ऐसे ले आता हूँ, राइट? सो आई रोटेट इट लाइक दिस. सो व्हाट विल हैपन, इस साइड साउथ पोल है, जो जो मैग्नेट का नॉर्थ पोल है वो यहाँ आ जाएगा, और मैग्नेट का जो साउथ पोल है वो यहाँ पे आ जाएगा. It's very nice that north pole of the magnet is now towards the south pole of the bigger magnet, which is producing the external magnetic field. This is a very great situation. Very nice. This is a state. So, but the 90 degree turning has happened. If I turn this also with 90 degree, what will happen? If you have a circular loop which is in the XY plane like this, imagine it to be here on the ground, on the surface, जमीन के नीचे पड़ा है, मतलब ऐसे पपड़ की तरह नीचे पड़ा है, मतलब जमीन पे. 3D में दिखता नहीं ना ऐसे कि कहां पड़ा हुआ है. ऊपर नहीं है ये, Z एक्सिस में बिल्कुल जमीन पे ही है. ठीक है. ठीक है. अब इसको मैं रोटेट करके 90 डिग्री घुमाता हूं. लेट मी रोटेट इट बाय 90 डिग्री एंड ब्रिंग इट हियर. अब ये YZ प्लेन में पड़ा हुआ है, सॉरी YX प्लेन में, इफ यू नोटिस. हाँ यस सर. दिख रहा है XY प्लेन, मतलब क्या कैसे बोले इसको, हाउ डू आई, लेट मी जस्ट नॉट कीप इट हियर, लेट मी जस्ट रीड्रॉ दिस एंड से लेट्स कीप इट नॉट एट द सेंटर.
थोड़ा देखने में आई थिंक इट शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड. लेट मी रीड्रॉ दिस. सो लेट्स रीड्रॉ दिस. दिस इज नाउ हेयर. हम्म, ये भी तो एक्स वाई प्लेन ही है, yes, sir. लेकिन इसमें देखना आसान है थोड़ा. हम्म, सो yes, दिस sir. इज एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड. तो हम्म, मैग्नेटिक मूवमेंट इस समय ऊपर है, और हमें क्या चाहिए कि मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो एक्स के पैरेलल हो जाए. बिल्कुल. अब इसको कैसे घुमाऊं मैं? तो मतलब मैं अगर इसको खड़ा कर दूं, इधर फिक्स करके इधर से उठाना शुरू कर दूं, तो मैं इसको उठा के अगर यहां ले आऊं अच्छा. 90 डिग्री, तो इसका एम यू नहीं हो जाएगा? हाँ, होगा. तो हो गया ना हम्म, स्टेबल इक्विलिब्रियम. yes, sir. एक्चुअली इसने डायरेक्शन ऑफ करंट दी नहीं है, लेकिन हम अज्यूम कर रहे हैं 90 डिग्री पे हो जाएगा. हो सकता है एम उल्टा हो जाए इस समय बी के मुकाबले, बट जो भी होगा एक वाई जेड प्लेन में ही पैरेलल बन सकता है ये. हम्म, इसका जो एम अब यहाँ आ गया ना, जो ये एम था, yes, sir. ये आ गया. आप देख रहे हैं बी के पैरेलल हो गया. अच्छा, हो गया. हो सकता है करंट ऐसा हो कि उस साइड हो, हम्म, लेकिन प्लेन तो वही रहेगा ना, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा, क्योंकि उस समय एंगल 180 डिग्री है. yes, sir. अब हम अज्यूम कर रहे हैं कि रखेंगे तो वाई जेड में, और वाई जेड में दो संभावनाएं हैं. आइदर द एम इज गोइंग टू बी पैरेलल टू बी, और एम इज गोइंग टू बी पैरेलल टू, एंटी पैरेलल टू बी. B. We are assuming the favorable condition, but in either case, answer is still YZ plane. हम्म, ठीक है. So question was, in which plane should you shift this loop so that it acquires stable equilibrium and doesn't want to move from it? हम्म, YZ. Although somebody can Y say हो Z सकता है सबसे सर पहले. आपको तो उल्टी साइड अगर M हुआ तो आप तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में हो जाओगे, लेकिन वो भी तो पैरेलल, एंटी पैरेलल है ना. मुझे तो क्वेश्चन में अगर करंट की डायरेक्शन आप दे दो, पैरेलल नहीं करंट चाहिए. इज दिस, हम्म, तो मैं अपना थंब रूल लगा के बोल दूंगा ये मेरा करंट का डायरेक्शन बना लिया मैंने. इसमें मेरा एम राइट साइड है. यू कैन कीप योर हैंड, राइट हैंड टू द लूप. अच्छा सॉरी, उसके अंदर अंदर चली जाएगी. सो करंट डायरेक्शन हैज टू बी दिस. या तो दे दो करंट की डायरेक्शन की ये थी, हम्म, और मैंने उसको, अब यू कैन फोल्ड योर फिंगर्स ऑन दिस लूप एंड सी एम विल बी कमिंग टुवर्ड्स द राइट, तो पैरेलल हो गया. yes, sir. बट इधर वे 90 डिग्री रोटेशन पे देर इज अ चांस दैट यू विल गेट इट पैरेलल टू बी. 50% चांस है, एंटी पैरेलल भी आ सकता है. अच्छा, ओके. उल्टी साइड भी तो हो सकता है ना एम, अगर करंट की डायरेक्शन उल्टी हो जाए. अगर करंट ऐसे है अच्छा, समझ गया. क्लियर हो और गया. करंट अगर ऐसे है तो फिर ऐसे हो जाएगा, फिर क्या करोगे? हाँ, यस, ये सर. वो दिया नहीं है, फिगर दियो तो इजी है बोलना फिर, वो तो है. हाँ, कि भाई ऐसे रख दो आप इसको. ठीक है, समझ गया. समझ में आया क्या हुआ है, या आप हाँ. नहीं पल्ले पड़ा? नहीं, एम को समझ गया. पैरेलल टू बी लेके आना था, दैट्स ऑल. कुछ नहीं करा मैंने, आई हैव डन नथिंग. यस, सर. ऑलराइट, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. So there is a bar magnet, and so the bar magnet has a dipole moment which is known to you. So it is 5 ampere meter square, and it is resting with the center on a frictionless pivot. Okay, हम्म, pivot is a place from where you can turn or change. Pivot का मतलब होता है बदलने वाली जगह. हम्म, It pivoting, right? Changing. यस, सर. जहाँ से टर्निंग हो गई मतलब, ठीक है. हम्म, Anyway, so we'll draw the diagram. So force is applied at right angles to the axis of the magnet. So this is your magnet, and there is a force which is applied which is at right angles to the axis of the, so this is your magnetic axis. वो तो इक्वेटर होता है, तो फोर्स लगा, हम्म, एक फोर्स इज अप्लाइड along the axis of the equator, and it is 10 centimeter. It is from the point of pivot, and so maybe it is pivoted like this, ऐसा लग रहा है मुझे. Okay, and it is observed that external magnetic field is required to hold the magnet in equilibrium at an angle 30 degree with the field. तो आपको फोर्स जो you are applying a force on your own at right angles to the axis of the magnet. Sorry, the force is at right angles to the axis. ये तो along the axis बन गई. हाँ, यस, सर. बेवकूफ. Anyway, maybe you're applying 10 centimeter from the pivot. So 10 centimeter from the pivot. So force is being applied like basically आप magnet को ऊपर की तरफ turn कर रहे हो ऐसे.
टॉर्क समझ लगा गया। रहे हो, यहाँ पे हम्म फिक्स्ड आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, आपको क्या करना पड़ रहा है, यू हैव टू अप्लाई एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.25 टेस्ला, एंड देयर व्हाट हैपेंस इज द bar magnet becomes in equilibrium. You have to calculate the value of F. Okay, हम्म so you are applying an external magnetic field. That external magnetic field is also giving it a torque of mb sine 30. ओके। So this particular uh, तो एक तो इसके ऊपर टॉर्क लग रहा है जो मैकेनिकल टॉर्क लग रहा है हमारे हाथ से, जो इसको रोटेट यस सर। करने की कोशिश कर रहा है, हम्म ठीक है। और इसको रोटेट करके मान लो इट ब्रिंग्स इट हियर, अच्छा। इट रोटेट्स एंड इट ब्रिंग्स इट हियर, राइट, टॉर्क लग रहा है, हम्म रोटेशन हो रही है। बट देन रिमेंबर, बिकॉज इट इज इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, okay, so it is in an external magnetic field. So what is happening is the torque which is getting applied from our hand, जो हमारे हाथ से टॉर्क लग रहा है, उसके ऑपोजिट एक टॉर्क लग रहा है इसके ऊपर फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड। हम्म तो हम जब टॉर्क की बात करते हैं बार मैग्नेट के ऊपर, तो एक हमारे ऊपर ऐसी फोर्स लग रही होती है और एक ऐसे लग रही होती है फोर्स, रिमेंबर क्यू बी, यस सर। जो उसको टॉर्क प्रोवाइड करती है एक्चुअली, हम्म पोल स्ट्रेंथ इनटू बी। यस सर। तो जो टॉर्क है ये वाला, और फिर हम ले लेते हैं Q मल्टीप्लाई बाय 2L इज इक्वल एल टू M, ए। right? So theta. हम्म So anyway, so what happens is now you have a situation where this bar magnet is under equilibrium because the clockwise torque and the as you rotate, theta keeps on increasing, by the way. हम्म Torque is given by mb sine theta. As the angle between M and B changes, theta is increasing. ओके। पहले पैरेलल है, if you see the bar magnet is parallel, हम्म M is parallel to the uh, so assume कि this is your north pole and this is your this is your south pole and this is your north pole. Now you can see south to north is your M हम्म and B is this, both are parallel. Now from your hand you start applying finger and start moving it like this, is हाँ force से. That means you're creating a theta now. यस सर। If you create a theta, mb sine theta will come, with theta was 0 earlier. हम्म समझ गया। Now theta is emerging, which means हम्म the dipole will start experiencing another torque हम्म because of magnetic field. पहला टॉर्क तो आप हाथ से लगा रहे थे मैकेनिकल, यस दूसरा सर। टॉर्क जो है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। लुक एट द डायरेक्शंस व्हिच आई हैव ड्रॉन, एंटी क्लॉकवाइज, इसको रोटेट करने की कोशिश कर रहा है। मैं नीचे से उसे ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा हूँ और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है। तो नीचे वाला टॉर्क ऐसे है, दूसरी साइड से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है। सो एट सर्टेन पॉइंट द मैग्नेटिक टॉर्क साइन थीटा 30 डिग्री हो जाता है और जो मैं एक्सटर्नल टॉर्क लगा रहा हूँ मैकेनिकल, दोनों बराबर हो जाते हैं। अच्छा। मेरा एक्सटर्नल टॉर्क तो बड़ा सिंपल है, माय एक्सटर्नल टॉर्क इज एट डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर from the pivot. So my external torque, if you notice my external torque, I am at 10 centimeter distance and my external torque is force multiplied by the force arm. बिल्कुल। Force is F. I don't know the force, I have to find this force. 0.10 distance पे लग रही है ये वाले पिवट से। समझ गया। मेरा मुझे अपना टॉर्क मालूम है जो मैं हाथ से लगा रहा हूँ। It should become equal to the anti-clockwise torque coming from the magnetic dipole, जो dipole के ऊपर एक external magnetic field torque लगाता है। दोनों कैंसिल हो गए, रुक गया, मेरा आगे हाथ नहीं जा रहा, मुझे लगा अब रुक रहा है, बैलेंस हो गया। ये तो पहले मैं फ्रीली जा रहा था, थीटा बढ़ता जा रहा था, तो जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो अपना टॉर्क बढ़ाता जा रहा था, बिकॉज टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू थीटा एंड द मोर इज द थीटा मोर इज द टॉर्क, बिकॉज साइन थीटा इज हायर एट हायर वैल्यूज ऑफ थीटा। जितना थीटा बड़ा होगा साइन थीटा इज हायर। साइन थीटा भी ज्यादा होगा। तो मैंने इनको दोनों को बराबर कर लिया, एम बी साइन थीटा
is divided by 0.1. M is given to me Hmm. for the bar magnet. External magnetic field is known to me, Yes, sir. say 0.30 Tesla. Theta is known to me at the equilibrium position. The clockwise torque has become, ये मेरी इसने दिया नहीं, but equilibrium का मतलब है the rotational equilibrium, which means the anti-clockwise torque and the clockwise torque are equal. एक Hmm. चीज ऐसे घुमाने की मैं कोशिश कर रहा हूं और Hmm. आप उसी चीज को इस साइड से ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहे हो, किसी ना किसी जगह पे जाके वो रुक जाएगी, क्योंकि टर्निंग इफेक्ट जो इधर से आ रहा है और उधर से आ रहा है बराबर हो जाएगा. इसको बोलते हैं द एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क हैज बिकम इक्वल टू द क्लॉकवाइज टॉर्क. सो दिस इज कॉल्ड रोटेशनल इक्विलिब्रियम. Hmm. Yes, sir. Just like this, if you have a mass, you apply 5 Newton here and a 5 Newton here. This is static equilibrium. Hmm. Linearly it is at rest. Similarly, rotation में भी एक सीढ़ी अगर ऐसे खड़ी हुई है, उसके ऊपर यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है, यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है, यहाँ से फ्रिक्शन लग रही है, यहाँ पे वेट है. ये जो फोर्स है नॉर्मल रिएक्शन की, क्या ये सीढ़ी को ऐसे रोटेट करने के चक्कर में नहीं है ऐसे, Hmm. हाँ है. है ना? तो लेकिन हो तो नहीं रहा. इसका मतलब कोई रोटेशन को रोक रहा है, हो सकता है ये रोक रहा हो. Yes, sir. तो सारे हम टॉक लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे जो घुमाना चाहते हैं, दूसरे जो रोकते हैं घुमाने को एंटी क्लॉकवाइज, उनको इक्वल कर देते हैं और बोलते हैं लैडर हैज नॉट मूव्ड बिकॉज द टॉक विच इज क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज हैज कैंसल्ड ईच अदर. Hmm. अगर इफ यू हैव अ डोर and your cousin brother applies a torque, he applies force here at a distance of width of the door. This is the hinge जहाँ पे fixed है. You are applying here. Your cousin on the other side is applying here. Hmm. He is applying 10 newtons and he is at a distance of 20 centimeter. You are applying 5 newtons but your distance is 40 centimeter. So 5 into 40 क्या हो जाएगा? 200 न्यूटन. 200. ये हो जाएगा 10 into 20, 200. Equilibrium. Hmm. The Yes, sir. door will not move because this torque, which is trying to rotate it, is getting cancelled by another torque which is trying to rotate it in the other direction. तो रोटेशन हुई नहीं ना, दोनों Yes, टॉर्क sir. रोक दिया. हाँ. नाउ समझ में आया? हाँ. Yes, sir. इसी तरह से डाइपोल को मैं हाथ से इधर से गोल घुमा रहा हूं और ऊपर से एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डाइपोल को टॉर्क दे रहा है. दोनों कैंसल हो जाते हैं 30 डिग्री पे आके. Any questions in your mind that is not clear, etc., etc.? नहीं, ठीक है. ठीक है ना? All right. Hmm. Okay. Just give me one moment, right? ठीक है. Just a break. हाँ. कोई. Got tired of speaking. हाँ. कोई दिक्कत नहीं. Okay. इसमें लिख दे ब्रेक के बाद. नहीं, हम इस पे लिख देते हैं ओपन फॉर एडवर्टीजमेंट्स ड्यूरिंग द ब्रेक चार्जेस 10 lakhs. निर्मा की ऐड कर सकते हैं हम. बोलो जी साबुन की ऐड अलग कर सकते हैं, आ जाओ. Yes, sir. साबुन तेल जो भी चाहिए. Hmm. बढ़िया आइडिया. बोलते ऐसी कंघी है हमारे पास, उसको करो मार्क्स बढ़ जाएंगे तुम्हारे. Hmm. कंघी करो, सुबह कंघी करो, सो जाओ, Yes, sir. सुबह उठो तुम्हारे मार्क्स बढ़ जाएंगे. या स्मार्ट ग्लासेस. हाँ, मतलब ऐसा कुछ लिख दो बस. दिस इज व्हाट पीपल वांट टू हियर. बिल्कुल. अरे फुल मसाला. Hmm. ज्ञान किसी को नहीं चाहिए यूट्यूब पे. Okay. कुत्ता बिल्ली बच्चे सबसे ज्यादा बच्चे हिट होते हैं शॉर्ट्स में. Hmm. क्यूट होते हैं ना बड़े. Yes, sir. आर वी इन समर्स और आर वी इन विंटर्स, ये कंफ्यूजन है मेरे दिमाग मेरे माइंड को. तो
ये तो सबको ही है अभी। वो क्या रहा है? कुछ समझ ही नहीं कुछ आ भी रहा। हो जाता है. Anything is हम्म। happening. यस सर। Okay, let's do the next one. Okay. Now, so we have done the equilibrium part. I hope you understood torque cancellation, anti-clockwise and clockwise. Now we have covered dipole. We have covered torque on a dipole, magnet energy of a dipole. एनर्जी का तो कोई खास क्वेश्चन अभी आया नहीं नहीं। सिवाय स्टेबल इक्विलिब्रियम का एक आया जिसमें आप लूप को घुमा के आपको वाई जेड में लेके आना है. एंड हम्म। देन वी हैव डन क्वेश्चंस ऑन एनआईए, स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्शन. और अभी हमने करा वो वाला बार मैग्नेट के ऊपर टॉर्क का मैकेनिक्स थी, थोड़ी सी रोटेशनल डायनेमिक्स, जहाँ पे क्लॉकवाइज टॉर्क का ज्यादा एम्फोसिस था, हाथ से टॉर्क दे रहे हैं, एक्सटर्नल टॉर्क से बैलेंस कर रहे हैं. नाउ लेट्स गो हम्म। टू द नेक्स्ट वन. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट. So there is a hydrogen atom with an electron which is moving in a radius of 0.5 into 10 raised to power minus 10 ammeters, and the omega is given to be 10 revolutions per second. अच्छा। ठीक है. और want you to find the magnetic moment. So no, you know that now we don't have to apply NIA. Be very careful because it's an electron. So orbital magnetic moment का formula याद रखना है आपको. यस सर। ठीक है. Just put the value of orbital magnetic moment m. वो हमने जो निकाला था करंट को क्या माना था, आई क्या था, Q बाय टी, यस सर। है ना. हम्म। ऐसे ही करा था ना हमने इसका डेरिवेशन. करेक्ट। करंट को आप ये मान लो और देन कन्वर्ट द वैल्यू ऑफ करंट इन yes, so mu was EVR by 2. Okay, EVR by 2. So you know electron, you know omega. Omega V is equal to omega R. So we know omega, so I can convert into radius से multiply कर दूंगा मैं. So E into 10 into 2 pi. I have written, okay, charge नहीं लिखा मैंने, V लिख दिया मैंने. सॉरी, ओमेगा इंटू आर कर रहा हूं मैं. So, एक आर ये है और एक आर ऑलरेडी फॉर्मूले में है, तो आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 आंसर. ये तो इजी इजी क्वेश्चन। Yeah, basically, if you want to write it like that, then you can also write it as that जो हमने डेरिवेशन करी थी, क्या करी थी, इज इक्वल टू आई इंटू ए के बराबर लिया था. फिर आई जो था दैट वाज क्यू बाई टी, राइट, इज इक्वल इनटू एरिया. सो एरिया तो हमें मालूम है बिकॉज वी नो द रेडियस ऑफ रेवोल्यूशन. सो द ट्रीटिंग एट पार विद द करंट लूप, सो पाई आर स्क्वायर ही हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर. क्यू तो इलेक्ट्रॉन का रहेगा, बट दिस टी इज द टाइम पीरियड, द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन. सो इन वन रेवोल्यूशन वाला, राइट. तो ओमेगा अगर हमें पता, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी. So T is equal to 2 pi by omega. So Q divided by 2 pi omega into A. That's your M. आ गया. ठीक है. वो सॉल्व करके वही आना था, EVR by 2. यस सर. कट जाएगा ना एरिया का 2 पाई पाई, पाई आर स्क्वायर से कट जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर वही आर स्क्वायर आ रहा है जो हमारा. ठीक है. राइट. और ओमेगा विल बी इक्वल टू V by R, और एरिया का आर आर कट जाएगा, तो EVR by 2 ही रह जाएगा फाइनली. दिस इज मोर ऑफ डेरिवेशन की Q by T, ओमेगा इज इक्वल टाइम पीरियड से T है, तो पूरा पूरा दिस इज मोर ऑफ मोर डेरिवेशन. ऑलराइट. Now let's talk about next one. So let's say you have an electron which is moving around the nucleus, and the radius is given to be 0.51. Next question. Okay, so R is given to you and the velocity is given to 2 into 10 raised to power 6 meter per second. Okay, now calculate first the equivalent current due to the orbital motion of the equivalent current of the
नॉट ऑफ द ड्यू टू द ऑर्बिटल मोशन, जो अभी हमने करा है क्यू बाई टी, yes sir, इक्विवेलेंट करंट ही निकाला तो क्यू बाई टी होता है जी। लो, so q is 1.6 into 10 raised to power minus 19 because it is electron. Omega is equal to 2 pi by t. T is equal to 2 pi by omega. omega, 2 pi by omega. Okay, so v is equal to omega r, and v is given to us. So I can find omega with the help of this, right? So v by r is equal to omega is equal to 2 pi by t. So therefore t is equal to 2 pi r by v. v, तो ये मैं टाइम पीरियड से डिवाइड जब करूँगा 1.6 इंटू ओमेगा, वो टाइम, अच्छा, ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू v by r. So I will put v by r here. I know v and r, so I can find the equivalent current. आ गया, I आ गया, yes sir, amperes, ठीक है, rate of flow of current. बस फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगर पता है q by t आंसर, फॉर्मूला फिटिंग है, कुछ नहीं है। yes sir, Magnetic field produced by the at the center of the nucleus. Now, yes, since it's a current carrying loop, we have studied due to a current carrying loop at the center, the magnetic field is mu I upon 2 pi r. 2r, sorry. Magnetic field at the center of a current carrying loop is this. I अभी निकाल लिया हमने ऊपर से, रेडियस हमें मालूम है, आंसर। ठीक है, Calculate the magnetic moment associated with the electron. Mu. Good for you, ठीक है जी। EV R by 2, answer. Ampere meter square. Whatever you get, if you divide it with that 9 point something, you can get Bohr magnetrons. Last question, convert it into Bohr magnetrons. Given one Bohr magnetron is equal to 9.27 into 10 raised to power, divide कर देना, those many magnetrons. magnetron, खत्म। yes sir, Any doubts that come in your mind, you find it नहीं, अभी impossible to understand? इन क्वेश्चन में तो नहीं आता। यही क्वेश्चन है बस, दैट्स ऑल, और कुछ है भी नहीं। ठीक है, Okay, let's go to the next one. So now you have two magnets. Okay, so let's talk about the situation of two magnets. Next question. So connect that. So you have two bar magnets, and these two magnets are such that they are connected to each other and they create a cross. Now what happens is they're kept in a uniform magnetic field. okay, Obviously both of them will experience a torque, टॉर्क होगा, right? And now you have to say, so they are suspended freely in the uniform magnetic field, and in equilibrium position the magnet of the magnetic moment makes an angle theta with the field. ठीक है? So now you have to find the theta, where finally wherever it stops after free suspension, हो सकता है दोनों पे टॉर्क उल्टी डायरेक्शन में लग रहा और कहीं पे जाके रुक जाए, इक्विलिब्रियम आ जाए। yes sir, ठीक है? सो क्वेश्चन क्या है? इन इक्विलिब्रियम पोजीशन द मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m, विच इज द नेट मैग्नेटिक मोमेंट m, दोनों का जो रिजल्टेंट है m, that finally makes an angle theta with the field. okay, And you remember that the magnetic moment जो है, right? What is the tendency of a so you have this combined, right? And both of them are experiencing a torque. तो ये दोनों जो हैं उसके इन्फ्लुएंस में दोनों के टॉर्क में they will come to an equilibrium, and the torque on this is in this direction maybe, and the torque is in this direction on this. yes sir, If you suspend any bar magnet in a magnetic field, what is going to happen? Both will experience a torque. correct, And it is said that they come in equilibrium, that is, they stop at a particular position. What is the moment you hear the word equilibrium?
वन इज ऑब्वियसली कि ये पैरेलल हो जाता है थीटा इज इक्वल टू जीरो पे, सो इट्स अ स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन. Understood. But if it's a case of two magnets and you, and for example, in the previous question also, you listen to the fact that there is a hand being used to provide a torque, and there is an external magnetic field also, which is going to apply the torque, which means you have this Hmm. manual torque as well as the torque coming from the, and the word was equilibrium. So for this type of situation, it is rotational equilibrium being mentioned. Stable equilibrium नहीं लिखा हुआ. It comes to stable equilibrium. That was the impression I started with. That the combination of these two comes in a stable equilibrium. तो मुझे लगा यार थीटा तो जीरो होगा फिर Hmm. इन दोनों के रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट का. Yes, sir. बट इन्होंने इन्होंने नहीं बोला कि द इक्विलिब्रियम वो वाला है. इन्होंने लिखा इक्विलिब्रियम, स्टेबल नहीं लिखा वर्ड. इसका Okay. मतलब है इन दोनों के ऊपर ऑपोजिट, इक्वल एंड ऑपोजिट टॉर्क लग रहा है. Hmm. जो इस पे टॉर्क लग रहा है वो इसके ऊपर उल्टा लग रहा है, इसलिए रुक गया ये. इट इज नॉट मूविंग एनी. तो टॉर्क विच इज एक्सपीरियंस बाय द फर्स्ट इज एम बी साइन थीटा, Correct. एंड द सेकेंड वन, इफ दिस एंगल इज, फॉर एग्जाम्पल दिस एंगल इज थीटा. लेट मी ड्रॉ द फिगर सो दैट इट इज क्लियर इन योर हेड. सो ये मान लो आपका एक्स एंड वाई एक्सिस है. एक आपका मैग्नेट मान लो ऐसे इंक्लाइंड है, और दूसरा इसके ऊपर क्रॉस फॉर्म में लगा हुआ है. Hmm. अब ये रुक गए हैं दोनों. ये ऐसे घूमने को तैयार है और ये इस तरफ जा रहा है. ठीक है. ऑपोजिट टॉर्क्स. सो नेट टॉर्क ऑन द सिस्टम इज जीरो. Hmm. ये थीटा है, ये 90 है. तो इसके ऊपर जब मैं टॉर्क लिख रहा हूं तो मैं लिख रहा हूं टॉर्क वन, ये m1 है, इज इक्वल टू m1b साइन थीटा. टॉर्क वन. Okay. अब मैं इस पर टॉर्क टू लिखना चाहता हूं. दिस इज √3m. √3m1 दिया हुआ है. द Hmm. सेकेंड मैग्नेट हैज अ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ √3m. बी दोनों में सेम है. अच्छा, सेम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. Hmm. Yes, sir. क्वेश्चन इज अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल कितना है बी के साथ. अच्छा. सी इट, ये थीटा है Hmm. तो ये एक 90 डिग्री एक्स्ट्रा नहीं आ रहा. आ रहा है. थीटा प्लस 90. Hmm. Correct. आंसर. Hmm. ठीक है. एनी डाउट इन योर माइंड की समझ नहीं आ रहा भाई क्या हो रहा है. नहीं, ये तो क्लियर है. क्लियर एज अ मड. Yes, sir. क्लियर एज अ मड का मतलब समझ लो कि पानी में मिट्टी पड़ी हुई है उतनी क्लैरिटी है. मैंने बोला था क्लियर एज अ मड. तुमने बोला यस सर, तो मुझे मतलब लगा उतना ही कोई क्लियर है. मुझे लगा कोई ऐसा कोई चीज भाई हो. देखो, अंग्रेजी की ट्रिक देखो ना. बोला क्लियर एज अ मड. बस. भाई जैसे धुंध होती है ना, क्लियर एज अ धुंध. हाँ जी, Hmm. क्लियर एज अ धुंध. तो भाई धुंध तो क्लियर नहीं आती भाई. तो कुछ समझ नहीं आया. मुझे लगा कि कोई ऐसी चीज नया स्लैंग आ गया कोई टाइप. ना ना, क्लियर एज अ मड मतलब बिल्कुल ऊपर से निकल गया. Hmm. और ट्रिकी मतलब वे ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश. Yes, sir. मैंने इसलिए करवाए क्योंकि इसमें ना थोड़ा टॉर्क टॉक आता है. Hmm. सो दैट कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर. इक्विलिब्रियम, टॉर्क, उसे डरना नहीं है. तो यू सी द इंपॉर्टेंस ऑफ क्लास 11th. Yes, sir. इफ यू डोंट नो व्हाट इज दिस रोटेशनल इक्विलिब्रियम, दरवाजे का एग्जांपल छोटा सा जैसे मैं ले लिया था, यू कैन स्टार्ट इट. आपको पता नहीं चलेगा बोल क्या रहे हैं Hmm. Yes, भाई. sir.
पिवेट टॉर्क व्हाट क्या बोल रहे हो भाई? So you got to be, I mean, you may not be expert, but पता होना चाहिए था. हम्म, I wanted. All right. Just a very small, childish question, but we can still try to do it. It's a quiz, okay? No, not a numerical exactly, but more of. So, example is you get this question like this, okay? नो ये तो बहुत इजी है। ये थोड़ा बच्चों वाला ही ये है. तो कुछ ज्यादा इजी है। हाँ. मैग्नेट चुपके में. ये सर ये तो बहुत इजी है। हाँ, ठीक है. ये तो अल्टीमेटली। मेरा 8वीं 9वीं का है शायद कोई. हाँ यस सर। वही कह रहा था मैं, तो टाइम पास लग रहा है. यस सर। कुछ पूछा नहीं है. तो इसमें इफ यू नोटिस, this chapter also gets into that magnetic field due to a circular current carrying conductor. हम्म। वो भी आ रहा है ना थोड़ा थोड़ा. यस सर। भाई अगर ये घूम रहा है तो फिर बताओ जी इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा इसकी वजह से. सो द करंट कैरिंग कंडक्टर is having a magnetic movement, but it is also producing a magnetic field at the center. हाँ Mu naught यस। I by 2r. तो हम्म, तो मतलब ट्रिकी है. तो थोड़ा 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 सा। मिक्सिंग होती है कहीं ना कहीं पे. पूछ यस सर। लेते हैं ऐसे कि डू यू रियली अंडरस्टैंड. ठीक है। Okay, and so we are doing. So I will suggest you one thing. ये numerical तो I think you've done ample. I think हम्म। ये sense तो आ गई है कि क्या है, right? यस सर। I will send you at the end of the exercise, but try and do some questions ठीक है। अपने हाथ से. Give it a shot because you can see if you don't know the formula, यस सर बिल्कुल। है ना. कॉन्सेप्चुअली आपको टॉर्क का थोड़ा सा और अच्छा आइडिया होना चाहिए. यार ये कहाँ से कैसे लगता है और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे लेते हैं. इफ हम्म। यू गेट दैट देन यू हैव मास्टर्ड. थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन इज unknowns are talk clarity. हम्म। It's a new thing for you. I think you have यस सर। not done talk questions in detail. मतलब हम्म। तो वो इक्विलिब्रियम का मतलब जो है कैसे टॉक लगते हैं, ठीक है समझ गया। है ना. एक वो थोड़ा सा है और बाकी तो इफ यू गेट दैट आई थिंक फिर तो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड है. जस्ट गिव मी 1 second. लेट मी सी इफ आई कैन. ओके. बार मैग्नेट डजंट सीम टू बी वेरी फेवरेबल टाइप ऑफ टॉपिक हम्म। कि लोगों ने बहुत ही उसके ऊपर कोई R&D करके डाला है. यस सर। अच्छा ओ बेटा. ओके. यस.
Any topic you particularly find difficult when you're revising, please let me know. We will repeat it. All it will take me is 10 minutes to make you understand it. Yes, sir. मेरे लिए 10 मिनट का काम है, मैं आपको समझा दूंगा. Hmm. So you don't hesitate कि ओह मैं बड़ा बुरा देखूंगा. You won't. नहीं. Yes. You will look stupid only when you don't ask. मुझे सब आता Hmm. है. फिर सब आता है तो फिर तो तुम गए काम से बेटा. हाँ, वो. तो तुम्हारा कचूमर बना दूंगा मैं. You will know. Yes, sir. पहले मैं पूछ लूंगा सब आता है ना. Yes, sir. पहले बेटा पूछा तो था नहीं मैंने, अब क्या बोलूं. फंस गया मैं तो. Yes, sir. बोला बहुत अच्छी बात है बेटा, अब आ जा तू, अब तेरी मंडे क्लास तक लगाता हूँ. शायद मेरे को एक आएंगे. हाँ मार्क ना पूछो ना, कोई बात नहीं. वी कैन मंडे रीडिस्कस. इट को टेक्स ठीक है. 10 मिनट्स एंड था आंसर इज देयर, राइट. क्लैरिटी चाहिए ना. Yes, sir. करना खुद ही है. क्लैरिटी चाहिए ना, क्लैरिटी गिवर चाहिए. आई नो, आई हैव अंडरस्टूड एंड आई कैन गो बैक. किताब वही है, सब कुछ वही है, क्लैरिटी की कमी होती है. दैट्स ऑल. थिंक यू ब्रिंग क्लैरिटी. रोशनी आ गई तो फिर क्या है. एक बार नहीं, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार आ जाती है. और अपना जब एक्सपोजर मिलता है तो योर ओन ब्रेन ऑल्सो स्टार्ट्स वर्किंग वेरी नाइसली. पहले जो संभव लगता था वो संभव. हो जाता है कि यानी कर लेंगे यार, कि ये तो ऐसा कुछ है नहीं इसके अंदर कि हम क्यों नहीं कर सकते भाई. बहुत ही नाराजगी है भाई. कुछ खासा ही इससे वो है. कोई किसी ने इसके अंदर कुछ, वैसे तो अपने पास बहुत कुछ है करने का, बट आई विल लीव दैट फॉर यू. बट चैप्टर खत्म होगा देन आई विल गो बैक टू एग्जाम्पलर. Okay. अभी मैंने खोली नहीं है अभी. आई मीन सो दैट यू डेवलप सम मेच्योरिटी, बिकॉज एग्जाम्पलर में मीन अ सिंगल क्वेश्चन हैविंग टू कॉन्सेप्ट्स. फिर हमने कुछ तो कवर नहीं कर उससे रखा हो तो पहले फंस मुझे जाएंगे. कॉन्सेप्ट क्लियर करना हाँ हाँ कर लेना. मार्क कर दो बस कि ये जी करना है मुझे. सो मतलब प्रैक्टिकली यू कैन स्कोर फुल मार्क्स, आई एम टेलिंग यू. पड़ेगा. यस, सर. एक एक अगर क्लियर होता जाता है दिमाग में तो फुल मार्क्स सिनेरियो फॉर यू. ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो पता नहीं होगा, करा नहीं होगा, देखा नहीं होगा. दिस इज मैं नोबडी विल से, बट आई एम टेलिंग यू. यस, सर. ओके, वन क्वेश्चन फॉर यू एंड ओके. देन वी कॉल इट अ डे. ठीक है. राइट. यू आर फ्री टू लुक एट फॉर्मूलाज, अलाउड है. ठीक ओपन है. बुक एग्जाम है. ठीक. इट्स अ प्रैक्टिस क्वेश्चन, राइट. तो वी कैन डू इट जॉइंटली. यस, सर. ऑलराइट, दैट्स योर क्वेश्चन. ओके. किसी ने लिखा है, वेरी गुड इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन, थैंक्स अ लॉट सर, टीचर्स लाइक यू शुड एडिट एनसीईआरटी बुक. आपकी कमेंट्स में. हाँ. वो नाइस. लिखते हैं ना यूट्यूबर पे, तो ऐसे लिख देते हैं. थैंक्स. यस, सर. Actually, that is my own whole agenda. NCRT, although it's a great book, I mean, I'm a great proponent of NCRT, but बट somehow आप I think काफी उनको खराब कर रहे कुछ हैं. इस तरह से लिख दिया है, काट दिया है कि सब बच्चों के लिए मुश्किल है. यस, सर. ठीक है.
feel free to ask me anything if you want to. Okay, so this is NIA wala scenario. Only thing is now you are keeping it inside an external magnetic field, so this will behave like a bar magnet, right? तो आपको बस बताना है m की डायरेक्शन जब b के साथ होगी तो 0 डिग्री तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, एंड जब ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। अपोजिट डायरेक्शन में होगा, सॉरी जब ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा तो u का फॉर्मूला जो था, नहीं नहीं नहीं, हाँ 0 डिग्री पे ही होगा, माइनस एम बी कॉस 0 है ना, इसमें मोस्ट नेगेटिव होता है 0 पे, सो पैरेलल होना चाहिए, विच मीन्स m and b हैव टू बी इन द सेम डायरेक्शन, विच मीन्स इफ द फील्ड इज लाइक दिस, दैट मीन्स आपकी कॉइल ऐसी है तो आपका m यहाँ पे होना चाहिए ना, m is perpendicular to the area. So this is the scenario for stable equilibrium. For unstable equilibrium, reverse it, उल्टी तरफ ले जाओ, अगर करंट इसमें ऐसे जा रहा है, रख के देख लेते हैं हाथ से ना, सो करंट इसमें ऐसे जा रहा है, क्योंकि अगर मैं फिंगर को ऐसे रैप कर रहा हूँ, एक सेकेंड, ऐसे इसी के साथ, सॉरी, तो यूं जा रहा है करंट, सॉरी, in this alignment and direction of the current, the magnetic field is outward. Hold it with your hand, finger fold करके ना ऐसे, अपने मुंह की तरफ फिंगर ले आओ ऐसे, fold it, so this is the direction. तो m इधर हो जाएगा, तो m b इस तरफ बनाया तो b, तो ये इक्विलिब्रियम है। अगर इसको हम उल्टा कर दें फिजिकली तो करंट विल चेंज द डायरेक्शन, इसको उल्टा कर देंगे तो करंट विल बिकम लाइक दिस, b इधर चला जाएगा, m सॉरी, b तो उधर ही रहेगा जहां था, so u will be minus mb cos 180, so this will be minus n minus plus mb जूल्स। ये तो बहुत ज्यादा एनर्जी हो गई पॉजिटिव में, नहीं चाहिए भाई इतनी अनस्टेबल आंसर। कैलकुलेट, एक का आंसर माइनस एम बी, दूसरे का प्लस एम बी, गेट द आंसर, कन्वर्ट सेंटीमीटर इनटू मीटर्स, इधर कैलकुलेट m इज इक्वल टू आई इंटू एरिया, आई इज नॉन पाई आर स्क्वायर, सो ये वाला m भी मालूम है। एनी डाउट्स, क्या नहीं समझ में आया? बस यही था जो कि क्या लगाना चाहिए, अब आपने बता दिया। हो गया क्लियर? यस सर। ठीक है जी, ठीक है। गो बैक एंड टेक रेस्ट, यस सर। do some revision, start marking previous chapters, we can cover them, 10 मिनट में I will explain you, कुछ नहीं होगा, pick up one topic at a time, से सर ये रहा, let's do some 3-4 questions also on top of this, कर लेंगे, मेरा असाइनमेंट है, बुक्स हैं कहीं से भी। ठीक है सर। चलो जी, see you